यस, गुड इवनिंग वंस अगेन। सो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था रिलेशनशिप बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, करेक्ट है। तो आज के लेक्चर में हमको उसके आगे का कंसेप्ट देखना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन, हाउ इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एज वेल एज द थिंग द एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ किस तरह से कनेक्टेड होते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये सब चीजें हमको आज के लेक्चर में देखनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे स्टडी करेंगे जो कि एक्चुअली पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में है। मोस्टली ऑल ऑफ यू मस्ट हैव बीन नोन दिस कंसेप्ट्स, ठीक है ना। ये सभी कंसेप्ट जो है, पीरियड और फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे फटाफट 2 मिनट में। Yes, let me say share the screen. I hope you can see the screen. Yes. Okay, so एक सिंपल सा एग्जांपल हम अभी आप लेने वाले हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, सपोज दिस इज द सर्कुलर मोशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल, सपोज इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट A here and suppose cover the whole circle and comes back to the same point once again, and its uniform circular motion is there, that means its velocity or speed is going to be constant. ओके, तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू कंप्लीट वन फुल रिवॉल्यूशन is actually called as the period of revolution. Remember, if the particle starts from this point, then when it goes up along this path, and it takes some time to complete the full circle. So the time required for completing the full circle is actually called as the time period of revolution. उसको हम simply period of revolution भी बोल सकते हैं, ठीक है, period of revolution. Yes, but how it is related with angular velocity we have to see now. It is denoted by capital T, and it can be found out by using the simple formula that, see here, time required for complete revolution will actually be, अभी 10th स्टैंडर्ड में तुमको एक फॉर्मूला पता होगा कि कोई भी बॉडी जब मूव करता है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हुआ करता है। ये पता है सभी को, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज एक्चुअली कॉल्ड एज द टाइम। ओके, वो अगर स्ट्रेट लाइन में भी हो, लो बैटरी, या इवन कौन सा भी डायरेक्शन में अगर हो तो भी वो हम यहाँ पे काम करेगा। Yes, so we can just see the concept here. Time required will be actually equal to distance upon speed. ये तो बेसिक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला तब यूज किया जा सकता है जब स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। स्पीड शुड बी कांस्टेंट फॉर दिस। ओके, तो अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन होल कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इट इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस, राइट। तो सर्कमफरेंस को अगर यहाँ पे आप डाल देंगे तो 2πr यहाँ पे आ जाएगा, और स्पीड जो पार्टिकल का है वो तो सिंपली v से हमने डिनोट किया हुआ है। तो इस तरह से पीरियड का एक फॉर्मूला हमको मिल जाता है जो कि 2πr अपॉन v, याद रखो ठीक से, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, एट द सेम टाइम we can just use the formula that is v is equal to r into omega that we have just proved in last lecture. So if we just put it here, then we can just get this period to be simply equal to 2πr upon r omega. So that here we can just see that this r just gets cancelled from numerator as well as denominator, and what are we left with is simply capital T is equal to 2π upon omega, correct? So this is actually going to be the formula for finding the period of revolution once again in the same way as this one here. तो ये वाला भी फॉर्मूला पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए है बिल्कुल, और ये वाला भी फॉर्मूला पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए है बिल्कुल। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम सपोज हमको वेलोसिटी दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जरूर, और अगर एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है
तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकेंगे बिल्कुल। तो इसलिए क्या दिया है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे ये दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला चूज कर सकते हैं यूज करने के लिए। यस, ओके। नाउ एट द सेम टाइम there is a concept of frequency of revolution. So what do you mean by that? Frequency of revolution? See here, frequency of revolution means that the number of revolutions uh, completed per unit time is actually called as the frequency of revolution, and it is generally denoted by n, or it may be denoted by f sometimes. ठीक है, तो ये frequency of revolution को या तो कभी n से डिनोट कर सकते हैं या तो कभी f से भी डिनोट कर सकते हैं. You can find some different books in which the frequency of revolution will be denoted by either n or f, no doubt. But just don't go into the notation, just understand the concept. So concept ऐसा है कि frequency of revolution which will be denoted by n will actually be the number of revolutions per unit time. Okay, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, number of revolutions upon time करना पड़ेगा. तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि देखो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस चला जाएगा न्यूमरेटर में. ओके, और जो भी जितने भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है वो यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा टाइम टाइम टेकन फॉर दोज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस. जितना भी टाइम उसके लिए लगता है तो वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा. जबकि पीरियड के लिए हमने यहाँ पे देखा कि पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. दैट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन जस्ट से दैट द टाइम completed per unit number of revolutions. करेक्ट है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को से टाइम को हमको डिवाइड करना पड़ेगा तो तब जाके हमको पीरियड मिलेगा, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगा. तो पीरियड और फ्रीक्वेंसी ये दोनों के डेफिनेशन से ही हमको पता चल रहा है कि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है, या उसको हम बोल सकते हैं दे आर जस्ट रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. बिकॉज इफ यू जस्ट सी द टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अपॉन time upon number of revolutions. Correct hai? And here from the frequency, definition of the frequency, we can just get the formula for frequency, that is number of revolutions per unit time. So in simple way we can just understand that this number of revolutions is denoted by capital N here, and the frequency will be denoted by small n here. What is the difference between this capital N and small n? We can just understand. Capital N is going to be the number of revolutions, okay, whereas the small n is going to be the frequency, that is called as the number of revolutions per unit time. ठीक है, rate of doing the revolutions, मतलब revolutions करने का जो rate है, how fast the revolutions are made, that is called actually the frequency, remember. And hence since these two are the just reciprocals of each other, we can just get that t into n is always equal to 1, just because t is going to be small t upon capital N, and n is actually going to be capital N upon small t, so that both of these n as well as t just gets cancelled, and what we are left with is simply 1. And hence we can just get that this the product of t and n is actually going to be 1. That means both of these two are just reciprocals of each other. So that means we can just say that the frequency is actually just a reciprocal of time period. That means n is going to be equal to 1 upon t. And once we understand this, that n is equal to 1 upon t, so we can just immediately get the formula for time frequency, because formula for time period is already known to us here. तो टाइम पीरियड के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, तो इनको यूज करके हम फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला बना सकते हैं आराम से. फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन टू बी सिंपली 1 upon t. तो अब यहाँ पे t क्या है, ये देखो, t is going to be 2 pi r upon v. So if its reciprocal is taken, we can just understand it will be actually v upon 2 pi r, no doubt. So in this way we have got the frequency formula for the frequency as it is, that is v upon 2 pi r, which is obtained from the definition of period only, or formula for period only. In the same way we can just obtain the formula for frequency, another formula for frequency in terms of omega, because period we know that it is equal to 2 pi by omega. So if you just reciprocal it, we can just get it as omega upon 2 pi as the formula for frequency. Okay, remember correctly. Or even we can just obtain this by using v is equal to r omega as well. Okay, अगर v equal to r omega यूज करेंगे तो ये वैल्यू v का अगर यहाँ पे रख दो तो यहाँ पे भी r कैंसिल हो जाएगा और हमको बचेगा simply omega upon 2 pi. That's all. So in this way we can just get the formula for frequency in this way. Alternatively, yes, from this we can get two more formulae for omega. See here,
यहाँ से हमको ओमेगा का और एक फॉर्मूला मिलता है, इवन वी का भी और एक फॉर्मूला मिल जाता है। देखो ओमेगा कैन बी रिटन टू बी सिंपली ओमेगा इज इक्वल टू, अगर इसको यहाँ पे लेके जाओ और ये टी को अगर नीचे लेके जाओ, शफल करो मतलब, तो उससे हमको ओमेगा का एक फॉर्मूला मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ टी। वी कैन जस्ट से दैट इट विल बी 2 पाई अपॉन टी, करेक्ट है। दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज omega, okay, and at the same time from this here we can just get the formula for omega। तो ये जो इक्वेशन है इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 पाई को इस तरफ लेके जा सकते हैं, so that we can just write this omega simply to be equal to 2 pi into n, where n is going to be the frequency। So omega is equal to 2 pi n, this is another formula for finding this angular velocity of a body, that is omega। and even we can just also find out the linear velocity here। तो linear velocity के लिए भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर ये वाला जो इक्वेशन है इसको अगर हम सपोज थोड़ा शफल करेंगे, इसमें v को अगर उस तरफ लेके जाएंगे और t को अगर इस तरफ नीचे डाल देंगे, तो हमको v के लिए एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखो linear velocity of a body v can actually be found out to be simply equal to 2 pi r upon t, that's it। so this is going to be actually the formula for linear velocity of a body, okay। and at the same time here also in this case if we just shuffle these terms here, तो ये वाला जो टर्म्स है तो वो अगर हम शफल करेंगे इसमें 2 पाई आर को अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो हमको v का वैल्यू मिल जाएगा आराम से, ओके। सो v कैन बी एक्चुअली रिटन टू बी सिंपली इक्वल टू 2 पाई r into n, that's it। so this is actually going to be the formula for linear velocity in terms of frequency, and this is the formula for linear velocity in terms of time period of revolution। this is the formula for angular velocity in terms of frequency, this is the formula for angular velocity in terms of time period, and these are the two formulae for time period, and these are the two formulae for yes, these are the two formulae for frequency, remember। so frequency के भी दो फॉर्मूले मिल गए, पीरियड के भी दो फॉर्मूले मिल गए, एंगुलर वेलोसिटी के दो फॉर्मूले मिल गए, लीनियर वेलोसिटी के भी दो फॉर्मूले मिल गए हमको। इवन दिस फॉर्मूला कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग v इज इक्वल टू r ओमेगा, जो हमको पता है ऑलरेडी, और v इज इक्वल टू r ओमेगा तो है हमारे पास, लेकिन ओमेगा जो है, तो ओमेगा के बदले अगर हम सपोज ये वाला फॉर्मूला जो हमारे पास है 2 पाई n वो अगर रिप्लेस कर देते हैं तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 2 पाई r into n which is already here, right। तो ये भी हमको मिल रहा है। तो मतलब एक तरफ से ये थोड़ा सा गोल गोल है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले तुमको याद रखने हैं ठीक से। और उससे भी आगे जाके अगर कभी कभी तुमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने के लिए बोला जाता है, देखो ठीक से अभी एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अगर ढूंढने के लिए बोला जाए तो व्हाट इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, एंड ऑब्वियसली इट विल मेक सेंस ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं और उसको अगर हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस के लिए अगर यूज करना चाहते हैं तो पता चलता है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैपिटल N कैन बी फाउंड आउट टू बी सिंपली इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू द टाइम टेकन, दैट्स इट। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम into the time itself, it gives us the number of revolutions as a total, no doubt। and even this formula is actually the consequence of the formula of the angular definition, angular velocity का जो definition है कि नहीं, देखो angular velocity का definition क्या है हमारे पास, ओमेगा is equal to थीटा अपॉन टाइम, करेक्ट है। तो ये ओमेगा का वैल्यू होता है थीटा डिवाइडेड बाय टाइम t here। so if we just take this t in that side, then we can be able to get this as theta is equal to omega into t, right। but already we have this in just that omega is equal to 2 pi n, right। so if we just replace it by that, then we will be able to get this in the next step, that is theta is equal to, yes, theta is equal to omega into t, okay। तो अभी इसमें देखो ओमेगा मतलब 2 पाई n हो गया, नो डाउट, तो 2 पाई n इंटू टी यहाँ पे आ गया। लेकिन इसमें और एक बात हमको समझनी जरूरी है कि थीटा का और एक फॉर्मूला है, पता है तुमको, थीटा कैन आल्सो बी रिटन टू बी सिंपली इक्वल टू, क्योंकि देखो एक, अच्छा ये जो है ये बात हम थोड़ा सा सेपरेट पेज पे ओपन करें, एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्लस्टर हो रहा है। यस, सपोज दैट देयर इज अ पार्टिकल performing uniform circular motion, okay, and suppose that it starts from a point in the plane here,
तो यहाँ पे ये पार्टिकल सपोज स्टार्ट करता है। ओके, अभी सोचो अगर ये पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन अगर कंप्लीट करता है, तो देखो इस तरह से ये पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने तक उसको कितना एंगल वो कवर करेगा, तो हम ये बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, इतना एंगल वो कवर करेगा। बिल्कुल, चलो ठीक है, 2 पाई इतना एंगल उसने कवर कर लिया। सो वी कैन जस्ट से दैट वन रिवॉल्यूशन करेस्पॉन्ड्स टू 2 पाई रेडियन एंगल। ओके, नाउ if you just suppose this take this same particle and suppose now it's going to revolve once again along the same circle here। अगर ये सेम सर्कल के अलोंग रिवॉल्व करना चालू करता है और अगर ये पूरा सर्कल अगर कंप्लीट करता है, सेकेंड सर्कल, ये सेकेंड सर्कल उसने कंप्लीट कर दिया। ओके, तो अभी इसने कितना एंगल कवर किया, हम बोल सकते हैं आराम से कि द टू रिवॉल्यूशंस करेस्पॉन्ड टू 2 पाई प्लस 2 पाई, मतलब 4 पाई रेडियन एंगल हो गया वो। तो एंगल हियर बिकम्स एक्चुअली 4 पाई इन दिस वे। चलो ठीक है, अगर सपोज अभी यहाँ पे वो तीसरी बार अगर रिवॉल्व करना चालू करता है, ठीक है, ये हम कलर इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कौन सा फर्स्ट रिवॉल्यूशन कौन सा सेकंड रिवॉल्यूशन। ओके, सो अभी थर्ड रिवॉल्यूशन जो है वो उसने कंप्लीट किया, और अभी यहाँ पे आने के बाद उसने कितना एंगल कवर किया, तो हम लिख सकते हैं 3 रिवॉल्यूशंस एक्चुअली करेस्पॉन्ड्स टू 6 पाई रेडियन एंगल। दैट मीन्स वी कैन जस्ट कंटिन्यू दिस फर्दर and just say that when the particle will just be able to complete fourth revolution, 4 रिवॉल्यूशन अगर वो कंप्लीट कर देगा, तो उसके बाद वो 8 पाई इतने रेडियन से एंगल कवर कर लेगा। करेक्ट है, द एंगल कवर्ड विल बी 8 पाई। सो इन जनरल वी कैन जस्ट कंटिन्यू दिस फर्दर and just say finally that when the particle will perform actually n revolutions, okay, जब वो n number of rotations करेगा या n revolutions number of revolutions करेगा, तो उस समय वो कितना एंगल कवर कर चुका होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो एक रिवॉल्यूशन से 2 पाई इतना एंगल कवर कर रहा है, तो n रिवॉल्यूशंस में कितना होगा, जरूर 2 पाई इंटू n इतना एंगल वो कवर करेगा। सो दिस विल एक्चुअली बी द एंगल कवर्ड। एंगल कवर्ड मींस थीटा उसको हम बोल सकते हैं जरूर। दिस इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, ओके, एंड हियर दिस विल बी द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द रेडियस वेक्टर। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वी कैन से, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, नो डाउट। So what is the relationship between the angular displacement and number of revolutions? We can just understand that this is the relationship between angular displacement and number of revolutions. So we can just say that the theta is going to be actually equal to 2 pi into capital N, where theta is going to be the angular displacement and N is going to be the number of revolutions. Remember, so there is a relationship between this theta and N also, and at the same time एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, एंगुलर वेलोसिटी, उसके लिए हमने अभी अभी 2 पाई इंटू स्मॉल एन ये वाला फॉर्मूला तो ऑलरेडी प्रूव करके रखा है। अभी देखो अगर सपोज हम ये रिलेशनशिप यूज करते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू, एक्चुअली होता क्या है, ओमेगा मतलब थीटा अपॉन टाइम होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। करेक्ट है, यस। सो अभी थीटा के बदले अगर हम डाल देंगे यहाँ पे theta is going to be 2 pi into capital N, correct है, capital N मतलब number of revolutions, okay, but here omega can be replaced actually by 2 pi into small n, right, and that is multiplied by t here. So in this case we can just cancel out this 2 pi straight away, and we can just get this capital N is equal to small n into t, which is already there, which we already know here. That means the number of revolutions is going to be actually the frequency multiplied by the time. वो तो हमको ऑलरेडी पता है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ इट इज डिफाइंड इटसेल्फ एज अ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर यूनिट टाइम। तो ये जो डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी का, इससे ही तो ये फॉर्मूला मिला हुआ है। तो इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे अगर ये n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू टी है, तो दोनों तरफ हम 2 पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अगर दोनों तरफ से 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 पाई इंटू n क्या बनेगा, थीटा बन जाएगा, और ये 2 पाई इंटू स्मॉल n क्या बनेगा, ओमेगा बन जाएगा, और हमको ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, जो कि फिर भी करेक्ट है। दैट मीन्स देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस इक्वेशन इटसेल्फ एंड दिस इक्वेशन हियर एक्चुअली। तो ये लिखना और ये लिखना एक्चुअली एक बराबर ही है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। सो दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इन दिस केस, ओके। चलो, लेकिन ये सब जो पूरा हमने डिस्कस किया, ये कब होगा, सिर्फ स्पीड कांस्टेंट हो, एंगुलर स्पीड जब कांस्टेंट होता है तब होगा, ओके। सो व्हेन द एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट,
we are not to talk about the angular acceleration in that case. Here in this case, the angular acceleration alpha will actually be equal to 0. Remember, alpha will be equal to 0 just because the angular velocity is going to be constant, or the linear speed of the particle is going to be constant. It's not going to change. So in this case, whenever the linear speed remains constant, we can just say that the angular acceleration of the particle is actually going to be 0. There is no angular acceleration at all. Okay. But when there is an angular acceleration to the particle, in that case, angular velocity can never become constant, can never remain constant. It will change. It will either increase or it may decrease. If it is increasing, then angular acceleration will be considered as positive. But if suppose it is decreasing, then the angular acceleration will be supposed to be negative. And if it is not changing, then in that case, the angular acceleration will be supposed to be 0. And this type of circular motion is called as a uniform circular motion. Okay, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या होता है, अल्फा 0 रहता है, ओमेगा कांस्टेंट रहता है. तो याद रखो ठीक से, ओमेगा is going to be constant, and at the same time we can just understand that this theta is directly proportional to the time. Okay, तो ये theta proportional to time होना और ओमेगा का कांस्टेंट होना और अल्फा का 0 होना, ये तीनों बातें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हुआ करती है. याद रखो ठीक से, uniform circular motion can be characterized by these three conditions. Either alpha must be 0, either omega must be constant, or theta must be proportional to time. Then in that case, we can just say that it will be a uniform circular motion. Otherwise, not. Otherwise, it will be the non-uniform circular motion. Yes. Now let us talk about the non-uniform circular motion here. What happens in case of the non-uniform circular motion? See, alpha is not going to be 0. Okay, alpha is not going to be 0. So it is non-zero. That means it may be positive, it may be negative, but it should be non-zero. Okay, and at the same time, omega is not going to be a constant. Okay, ये जो omega है, वो constant नहीं रहने वाला है. It depends on time. Anyhow, either times time or time square or maybe time cube or maybe time raised to 4, but it will depend on time, sure. But at the same time, theta here, theta is not also not going to be proportional to time here. तो ये जो theta है वो time के साथ directly proportional नहीं होगा. It may be that theta is directly proportional to time square. It may be that theta is going to be proportional to time cube, or it may be that this theta is proportional to time raised to 4 or 5 and 6, 7, 8, 9, 10, but not time simply. Okay, तो ये हमको अच्छी तरह समझना है. These are the three specialties of this non-uniform circular motion. Okay, अभी non-uniform circular motion के अंदर एक सिंपल सी बात हम यहाँ पे ले लेंगे कि सपोज अल्फा, चलो ठीक है, 0 तो नहीं है, non-uniform circular motion के अंदर अल्फा 0 तो हो ही नहीं सकता है. It is going to be non-zero. But if in case alpha is going to be constant at least, चलो ठीक है, 0 नहीं है माना, अगर वो constant होता है, constant रहता है अल्फा, तो उसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं uniformly accelerated circular motion. Okay, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही एक पार्ट है. ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन. Yes, what is this uniformly accelerated circular motion in which alpha remains constant? That is called as the uniformly accelerated circular motion. Okay, suppose for example, if suppose a fan is switched on, जैसे हम फैन को स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, उसका जो एंगुलर स्पीड जो है वो स्टार्टिंग में तो 0 होता है बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका एंगुलर स्पीड जो है वो भी बढ़ता जाता है. ठीक है, और उससे भी आगे जाके उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वो भी बढ़ता जाता है. उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज है वो भी टाइम के हिसाब से बढ़ता जा रहा है. तो ऐसी मोशन जो है उसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, इन विच अल्फा इज नॉट गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, बट there are two cases here in this case. Maybe alpha will be positive or it may be negative. Okay,
अगर अल्फा पॉजिटिव रहा तो उसको हम एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं विथ अल्फा इज पॉजिटिव. बट इफ सपोज अल्फा इज नेगेटिव, then in that case it will be supposed to be the uniformly retarded circular motion. एक्सेलरेटेड के बदले क्या आएगा, रिटार्डेड आ जाएगा, या तो फिर उसको हम सिंपली डी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन ऐसा भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन. ओके, सिर्फ यहाँ पे डी लगा दो तो उससे हमको ये एक्सेलरेशन नेगेटिव है ये उसमें से पता चल जाएगा. बिल्कुल. तो इस तरह से ये दो टाइप के मोशन होते हैं, एक तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन. Okay, so these are the two types of uniformly accelerated circular motion, remember. Now what happens in case of this uniformly accelerated circular motion or even uniformly deaccelerated circular motion? Alpha remains constant, so we can just find out the final angular velocity if we know the initial one and time also by using the definition of alpha. Alpha का definition क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे alpha is actually going to be the final angular velocity, that is omega f minus initial angular velocity, which is actually going to be omega I, we can say. Okay, omega f minus omega I, and that is to be divided by the time interval t here. So this will be the definition of alpha, that is angular acceleration, which will be responsible for first kinematical equation of motion in circular motion. Okay, first kinematical equation in uniformly accelerated circular motion. Okay, so uniformly accelerated circular motion के अंदर first kinematic equation कैसे हमको मिलेगा? So just take this time in that side so that we can just get this alpha into t to be simply equal to omega f minus omega I, and that is actually going to be equal to, so ये omega I को जो है वो इस तरफ लेके जाओ तो इससे हमको मिल जाएगा simply omega I plus alpha t is actually going to be omega f, which can also be written as omega f is equal to omega I plus alpha into t. This is actually called as the first kinematical equation of motion, sorry, circular motion, which is very similar to our kinematical equation in linear motion. If you just remember, तो 11th standard में तुमने actually देखा होगा कि there is a relationship between linear velocity or final velocity and initial velocity and linear acceleration, which can actually be found out by using the definition of acceleration only. तो acceleration का जो definition होता है v minus u upon t, इसको यूज करके हम ये t को उस तरफ लेके जा सकते हैं और हमको मिलेगा at is equal to v minus u, और इसको ही हम v minus u is equal to at ऐसा भी लिख सकते हैं, और v को फिर u plus at ऐसा भी लिख सकते हैं, जिसको ही फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन कहा जाता है. करेक्ट है. And at the same time, here in this case, in the linear motion, we have just proved the displacement. The displacement of a particle is actually going to be equal to ut plus half at square. Okay, so this is actually going to be the equation for displacement in case of linear motion. Okay, which is also called as the second kinematic equation in linear motion. And at the same time, there is a third one. So third kinematic equation कैसे दिखता है वो भी देखो ठीक से. The third kinematic equation can actually be written to be simply like this: v square, that means the final velocity का square, it happens to be u square plus 2as. This is the third kinematic equation, we can just say. And along with all these three, there is a fourth one also. Yeah, remember, this fourth kinematic equation is also as important as these three here. So ये तीनों के जैसा ही है ये भी. तो इसमें हम लिख सकते हैं इसको s, that means the displacement is actually equal to the average velocity. Average velocity मतलब क्या? u plus v by 2, that is called as the average, into time t. This is also can be regarded as a fourth kinematic equation, no doubt. So these are the four kinematic equations we can just see in the uniformly accelerated motion, linear motion. Okay, so in the same way here we can just translate all these four equations into circular motion. See how? तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हमको ये सभी इक्वेशंस जो है वो ट्रांसलेट करने हैं. ट्रांसलेट करने का मतलब क्या है, देखो कि यहाँ पे जैसा हम जानते हैं कि u जो है वो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी हुआ करता है. लीनियर मोशन में u मतलब इनिशियल वेलोसिटी हुआ करता है. तो अभी उसको हम रिप्लेस करेंगे ओमेगा i से.
ठीक है, ओमेगा आई, विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओके, लीनियर नहीं, एंगुलर वेलोसिटी। इन द सेम वे हियर जो v जो है, v को हम क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी बोल सकते हैं। सो अभी इसको हमको रिप्लेस करना होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के साथ, जिसको हम यहाँ पे ओमेगा एफ से डिनोट कर रहे हैं, नो डाउट। एंड देन हियर ए जो है, ए मतलब एक्सेलरेशन है, इट इज अ लीनियर एक्सेलरेशन एक्चुअली। So this linear acceleration is going to be replaced by this angular acceleration everywhere. And at the same time, this S stands for linear displacement actually. So this S is actually replaced by theta in case of circular motion. तो सर्कुलर मोशन के अंदर कोई भी जो इक्वेशन है लीनियर का, मतलब काइनेमेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमको क्या करना है, ये 4 चेंजेस करने हैं। दीज आर द 4 चेंजेस वी हैव टू डू in the equations so that we can just convert it into the circular motion. Now let us try to convert the first kinematic equation here. ये जो first kinematic equation है उसको अगर हम convert करेंगे circular motion के अंदर तो हमको क्या मिलेगा, देखो v के बदले क्या आएगा, ओमेगा f, ये बन गया, is equal to, इस u के बदले क्या हमको डालना है, ओमेगा i, that is the initial angular velocity, plus इस a के बदले क्या रखना है, अल्फा, ओके, सो दिस इज अल्फा इनटू टाइम। टाइम तो टाइम होता है, लीनियर हो या एंगुलर हो, तो इसलिए लीनियर मोशन हो या एंगुलर मोशन या रोटेशनल सर्कुलर मोशन हो, तो टाइम तो कभी बदलता नहीं है। टाइम को कभी हम एंगुलर टाइम कभी नहीं बोलते, तो इसलिए टाइम विल रिमेन टाइम ओनली, नो डाउट। देन अगेन दिस सेकंड इक्वेशन कैन आल्सो बी कन्वर्टेड और ट्रांसलेटेड इनटू द काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर द सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में इसको कन्वर्ट करना है तो s को रिप्लेस करना पड़ेगा हमको थीटा से, करेक्ट है। तो s के बदले आ गया, ये देखो थीटा, ओके, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर से u को रिप्लेस करना पड़ेगा ओमेगा i, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इन दिस केस हियर, इनटू t केप्ट एज इट इज, प्लस हाफ ऑफ a के बदले क्या आएगा, अल्फा, दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, इनटू टाइम का स्क्वायर, जो कि वैसे ही रहेगा, नो डाउट। इवन यहाँ पे भी हम देख सकते हैं v स्क्वायर, तो यहाँ पे v स्क्वायर के बदले क्या आने वाला है, ओमेगा f का स्क्वायर आने वाला है, जो कि रहेगा यहाँ पे ओमेगा i का स्क्वायर प्लस हियर इट इज 2 अल्फा थीटा। समझा कैसे, ये a को हमने रिप्लेस किया अल्फा से और s को रिप्लेस करना है थीटा से, तो इस तरह से ये 2 अल्फा थीटा बन गया। एंड दिस फोर्थ वन ऑल्सो कैन एक्चुअली बी ट्रांसलेटेड हियर इन दिस वे। सो थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू omega I plus omega f, that is to be divided by 2 here into t as it is. So this is actually going to be the fourth kinematic equation in this case here. Okay, so ये जो 4 kinematic equations हमको मिले हैं, ये इनको बोला जाता है the kinematic equations in circular motion. In fact, uniformly accelerated circular motion. Okay, तो ये चारों इक्वेशंस तुमको बिल्कुल सेम वैसे ही लर्न करके रखने हैं जैसे तुमने ये काइनेमेटिक इक्वेशंस यूनिफॉर्म सॉरी लीनियर मोशन के अंदर के काइनेमेटिक इक्वेशन लर्न करके रखे हैं। ये चारों जैसे लर्न करे किए हुए ना, सेम वैसे ही हमको ये 4 भी लर्न करने हैं। बट उससे भी आगे जाके हमको इन चारों को एक्सप्रेस करना है फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ रोटेशंस के फॉर्म में। देखो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ रोटेशंस, तो उसके लिए क्या करना है, देखो ठीक से। ओके, सपोज यस, ये और ये 4 काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज कभी करेंगे, समझा ठीक से। व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन and suppose it starts from the point here and at that time its angular velocity was suppose omega I here, okay, but after time t its angular velocity becomes omega f here। यहाँ पे जाने के बाद उसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा f के बराबर बन जाता है। और इस टाइम ड्यूरेशन में वो अगर अल्फा इतना एंगुलर एक्सेलरेशन अंडरगो करता है, मतलब इट अंडरगोज एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा ड्यूरिंग दिस टाइम, and also suppose it travels, its radius vector sweeps out an angle alpha sorry theta in this case। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो थीटा इतना एंगल अगर सबटेंड करता है, मतलब डिस्क्राइब करता है, तो ये सभी जो क्वांटिटीज है जैसे थीटा, टाइम टी, ओमेगा आई, अल्फा एफ, these are related with these equations which are called as the 3 kinematical equations of motion in circular motion। Okay,
सर्कुलर मोशन, उसको हम शॉर्ट में CM लिख देंगे, ठीक है, ठीक है, चलेगा ना? ओके, बट नाउ इफ यू सपोज एक्सप्रेस दिस ओमेगा आई इन टर्म्स ऑफ Fi, दैट मीन्स द इनिशियल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी को हम इनिशियल फ्रीक्वेंसी, फाइनल फ्रीक्वेंसी, और अल्फा को भी हम नया नाम दे सकते हैं, और थीटा को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रोटेशंस के फॉर्म में. ओके, तो लेट अस ट्राई इट ऑन द नेक्स्ट पेज हियर. यस, सी दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार. तो यहाँ पे हमने 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस जो है वो तो डिराइव किए हैं, बट ये इनके अंदर ओमेगा आई और ओमेगा एफ हमको दिख रहा है, ठीक है. And we already understood that whenever the particle will start its circular motion, and suppose it moves from a point A to B, यहाँ पे A से वो start करता है और B पे जाता है suppose, तो जब वो A पे होता है तो उस समय उसका angular velocity suppose ओमेगा I के बराबर है, और जब B पे जाता है तो उसका angular velocity suppose ओमेगा F के बराबर है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको सपोज t इतना टाइम लगता है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के टाइम तक वो एंगल जो है वो थीटा इतना डिस्क्राइब करता है, थीटा इतना एंगल वो डिस्क्राइब कर रहा है सपोज, और t इतना टाइम उसको लगा, और अल्फा इतना एंगुलर एक्सेलरेशन उसका हो रहा है. ये सब चीजें हैं सपोज, ठीक है. और एट द सेम टाइम अभी देखो यहाँ पे सपोज ये जो ओमेगा आई है, इट इज करेस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ni. okay, ni is going to be the initial frequency, we can say, and here omega f corresponds to the final frequency, we can call it as nf here in this case. Okay, and also this theta, ये जो theta है, theta मतलब total number of total angle described by the radius vector, right? but इस duration के अंदर कुछ उसने number of revolutions भी तो perform किए रहेंगे कि नहीं, उसको हम actually n से denote कर देंगे, n, ठीक है. this theta actually corresponds to n here, capital N. okay, capital N मतलब number of revolutions taking place in this time. okay, and time तो है ही already time, वो तो angular linear नहीं होता है. yes, अभी अगर इस इक्वेशन को ओमेगा एफ को अगर हम NF और NI के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो, we'll have to use the formula that is omega I, मतलब initial angular velocity. How it is connected with this ni, that is initial frequency here, it will be omega I is equal to 2 pi into ni. We can just understand why, because omega is equal to 2 pi n is the general equation for relationship between the omega and n, no doubt. So उसको भी हम यहाँ पे just write कर सकते हैं, omega is equal to 2 pi n in general. okay, ये जनरल इक्वेशन है. तो यहाँ पे हमारे पास दो ओमेगा है, मतलब दो एंगुलर वेलोसिटीज है, ये इनिशियल वाला है और ये फाइनल वाला है. तो इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी था उसके साथ करेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम ni से डिनोट करते हैं, तो उनके बीच में ये वाला रिलेशनशिप रहेगा जरूर. ओके, एंड एट द सेम टाइम ये जो ओमेगा एफ है, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है, that will be just connected with nf again with the same equation, that is omega f, that is actually going to be equal to 2 pi into nf, no doubt. okay, this is the relationship between omega f and nf. yes, तो ये हमको मिल गया. at the same time ये जो एंगल कवर किया जाता है, इस रेडियस वेक्टर द्वारा जो एंगल कवर किया है इस टाइम t के अंदर, वो एंगल और ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस n जो है, ये दोनों भी कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ using the relationship that is theta is equal to 2 pi into n. just we have proved now. अभी हमने इसको प्रूव किया है, बिकॉज एक रिवॉल्यूशंस के अंदर अगर 2 पाई इतना एंगल कवर होता है, तो n रिवॉल्यूशंस के अंदर जरूर 2 पाई इंटू n इतना एंगल कवर होगा जरूर, बिल्कुल. तो ये इस तरह से ये लॉजिक यूज करके हमने ये थीटा के बदले 2 पाई n डाला हुआ है. अभी ये वाला जो इक्वेशन है, फर्स्ट वाला इक्वेशन, उसको अगर हम ट्रांसलेट करते हैं हमारे इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से. देखो, ओमेगा एफ के बदले क्या आ जाएगा हमारा 2 पाई इंटू nf, राइट, nf, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा आई के बदले क्या आ जाएगा, देखो, सो इट विल बी 2 पाई इंटू ni, करेक्ट है, प्लस हियर इट विल बी सिंपली अल्फा इंटू टाइम t हियर इन दिस केस, करेक्ट है. तो दिस विल बी द इक्वेशन
which is called as the first kinematic equation in terms of frequencies. Remember, but here we can just divide everything by 2 pi, right? So इसको अगर हमने suppose divide किया 2 pi से, यहाँ पे भी हमने divide किया 2 pi से, okay? और यहाँ पे भी डिवाइड किया 2 पाई से, तो तीनों टर्म्स को अगर हमने 2 पाई से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या हमको? सिंपली वी कैन जस्ट से इट विल बी nf, ओके, nf that is equal to ni, that means the initial frequency plus alpha by 2 pi into t. Okay, so this will be actually called as the first kinematical equation of circular motion. Okay, remember, this is called as the first kinematical equation in terms of frequencies. Okay, this was also the first kinematical equation, but that was in terms of angular velocities, remember, but here we are going to get it in terms of frequency. Okay, now this is going to be the second kinematical equation in terms of angular velocities. Okay, but if we just want to translate it in terms of frequencies, then this theta can actually be replaced by this 2 pi n here. So we can just get this as 2 pi into n, which is going to be equal to omega I can be replaced by 2 pi ni here. Okay, so that we can just get this 2 pi ni into t plus here this half alpha t square can be written as it is. So this is half alpha into t square. But once again, if we just divide this whole thing by 2 pi once again, तो यहाँ पे भी हमको 2 pi से divide करना है, so that we can just get this divided by 2 pi divided by 2 pi, and here also divided by 2 pi, so that this 2 pi gets cancelled, 2 pi gets cancelled here, and the number of revolutions actually comes out to be equal to, yes, so number of revolutions will become equal to, ये 2 pi cancel हो गया, the initial frequency into time t plus here it is half kept as it is, and it will be alpha upon 2 pi into t square as a final equation for second kinematic equation in terms of frequencies and number of rotations here. Okay, so this is called as the second kinematic equation in terms of number of rotations, which can be obtained from this only. Yes, now this is actually going to be the third kinematic equation in terms of angular velocities, but we can no doubt convert it in terms of frequencies. So in order to do that, we can just have this omega f square to be replaced by 2 pi nf, right? So we can just get this as, okay, so 2 pi nf, sorry, small n, so 2 pi nf का whole square जो बन रहा है यहाँ पे ओमेगा आई का स्क्वायर, जो ओमेगा आई जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं 2 pi ni से, सो यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअली 2 pi into ni और उसका स्क्वायर प्लस here it will be 2 alpha theta. Again, this theta can actually be replaced by this 2 pi n, right? And hence in the next step we can just be able to get this 2 alpha into theta, where theta is replaced by 2 pi into capital N in this case, right? And then now we can once again just divide this whole thing by 2 pi का स्क्वायर, याद रखो ठीक से, तो यहाँ पे 2 pi का स्क्वायर जो है उससे हमको डिवाइड करना है। ये देखो यहाँ पे 2 pi स्क्वायर से डिवाइड किया, इधर भी 2 pi का स्क्वायर से डिवाइड किया, और यहाँ पे भी 2 pi स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ओके, सो 2 pi स्क्वायर कैन बी रिटन एज simply 2 pi into 2 pi, no doubt. Okay, so that here this 2 pi square and 2 pi square can be cancelled. Here also there is 2 pi square and 2 pi square will get cancelled, but here only 2 pi and 2 pi will get cancelled, and just what we are left with is simply nf square, क्योंकि square जो है square can be separated for 2 pi and nf separately, so that nf square will remain as it is here in the LHS, which is going to be equal to ni square in the RHS and plus here it will be, तो अभी यहाँ पे 2 जो है वो वैसे ही बचा रहेगा, और ये अल्फा के नीचे 2 pi हमको लिखना पड़ेगा, so this is alpha by 2 pi and that is multiplied with number of rotations, that is capital N here. So this will actually be the called as the third kinematic equation in terms of initial and final frequencies, no doubt. And at the same time we can just express this fourth one also. ये जो fourth वाला kinematic equation है तो उसको भी हम express कर सकते हैं
in terms of frequencies. Yes, सिर्फ उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे ये थीटा जो है, ये थीटा को हमको रिप्लेस करना होगा 2 पाई कैपिटल N से, ओमेगा आई को रिप्लेस करना होगा 2 पाई NI से, और ओमेगा F को 2 पाई NF से। तो ऑटोमेटिकली पूरा इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। यस, सो लेट अस डू दैट। थीटा के बदले आ गया 2 पाई इंटू कैपिटल N, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ब्रैकेट में ओमेगा आई के बदले डाल दिया 2 पाई इंटू NI, ओके, प्लस ओमेगा F के बदले हमने डाल दिया 2 पाई इंटू NF, right? That is to be divided by 2, and that is multiplied with T as it is. Okay, but here we can just take this 2 pi common and just cancel it out. Okay, so if we just do that, then we can just get that 2 pi into capital N, which is going to be equal to 2 pi taken common, and what we are left inside, so it will be NI plus NF divided by 2 and into T. So if we just cancel out this 2 pi from both sides, then we'll be able to get the relationship between this capital N. So capital N will actually be equal to NI plus NF, that is to be divided by 2 into time T as it is. So this can be regarded as a fourth kinematical equation of circular motion here in this case, in terms of frequencies, okay? So this is in terms of frequencies. This is in terms of angular velocities, okay? So these are the 4 kinematic equations which can be translated into circular motion and learned as it is. So ये सब जो kinematic equations है, ये आपको learn करने हैं, properly learn करने हैं. I am going to take the oral on these equations next time, okay? And also some MCQs, almost 10 MCQs based on these kinematic equations will be released in the app today, and you'll just solve it as a homework and as an assignment for today, okay?